Hey guys, good evening. So, केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशन्स कोर्स चला हुआ है आपका. दो कोर्सेज साइमल्टेनियसली यूट्यूब पे चले हैं. वन इज आओ प्रैक्टिस करें, राइट, which is for your upcoming NEET exam, and all those who have to sit for your JEEs, they can also do the practice because it's just a set of practice questions which we are doing from every chapter. और 8.1 हम लोगों ने खत्म कर दिया है redox reactions. नेक्स्ट आपका 9.1 आने वाला है वेरी वेरी सून. So just stay tuned for that, guys. But today is the time for chemistry for competitions. जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए मैं फिर से बता रही हूँ कि ये एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है chemistry for competitions, in which I am going to cover your entire syllabus of competition, starting from the very basics to all the tricks which we are going to use, to all the correlations, for you to answer the questions very 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 easily. Okay, so इसके notes, all right, one more thing, जिसको notes चाहिए, जिसको इसकी question practice चाहिए, chapter wise test चाहिए, they will have to go to the app, download the app. उस पे आपकी questions होंगे chapter wise और आपके notes भी होंगे chapter wise. So I am working on to it. Once we finish the first chapter की notes or questions, they will be put for you to, or they will be uploaded for you to practice, but that is going to be on the app. So theory is going to be here on the YouTube, and all your study material of this chemistry for competition study जो series है, that is going to be on the app. Okay, अब केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशन्स किस किस के लिए है ये उनको बता रही हूँ मैं, जिन्होंने फर्स्ट टू लेक्चर्स 1.1 और 1.2 नहीं देखे उनको भी देख लो. ऐप का लिंक आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप को. और 1.3 आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे. सो दिस इज one complete course जिसमें we will finish physical chemistry first, 11th and 12th, then we go on to organic chemistry 11th and 12th, and then we go on to the inorganic chemistry 11th and 12th. ठीक है, so I am using over here various books. जिनको बुक्स की रेफरेंस चाहिए, आई एम टेकिंग ओवर हियर ओपी टंडन, आई एम टेकिंग ओवर हियर पी बहादुर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, and I am taking over here Arihant, and of course we cannot forget the NCERT, which is very very important. किस किस के लिए ये कोर्स important है? All those who have to sit for your NEET 2023 2024, all those who have to sit for your IIT JEE 2023 2024, all those who have to sit for केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो उसमें से आप टॉपिक्स जो है उनको पिक कर सकते हो. और मास्टर कैडर वालों के लिए भी दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली बेनिफिशियल. जिन्होंने केमिस्ट्री का ओलंपियाड्स देना है 12th के बाद, उसके लिए भी ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज अ मल्टीफेरियस कोर्स व्हिच आई हैव टेकन. कॉम्पिटिशन्स, तभी मैंने इसको नाम दिया है कि सारे जिन्होंने भी कितने भी कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करना है उन सब के लिए दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट कंटेंट ऑफ केमिस्ट्री. राइट गाइज, सो बिफोर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आज की आपकी टॉपिक के ऊपर जा रही हूँ. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वी आर गोइंग टू 1.3 SI यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जब भी हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं या हम कोई भी आंसर रिपोर्ट करते हैं इन केमिस्ट्री, इन फिजिक्स, तो इन साइंस इनफैक्ट, तो हम लोग दो चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. वन इज गोइंग टू बी द न्यूमेरिक वैल्यू एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी द यूनिट. दोनों एक दूसरे के साथी है, दोनों एक दूसरे के बगैर कोई भी सेंस नहीं रखते हैं. तो न्यूमेरिक वैल्यू हो गई द वैल्यू व्हिच इज गिवन, एंड यूनिट इज the unit in which that value is measured. ठीक है, सो जब भी हम लोग फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर. अगर हमको लेंथ करना है तो लेंथ का न्यूमेरिक वैल्यू, एक रूम का हमने लेंथ देखा, जनरली हम लोग रूम की जो लेंथ है उसको हम लोग फीट में मेजर करते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट्स तो हम उसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो लेट्स से कि किसी भी एक रूम की यूनिट वी आर टेकिंग ओवर हियर, यूनिट लेंथ आ रही है 10 और यूनिट इज meters. Okay, so this is one important concept
किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, उसको हम स्टडी करेंगे आज अंडर डायमेंशनल एनालिसिस. सो गाइज, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई एम डूइंग, बिल्कुल बेसिक. ओके, 10th से जो 11th में गए हैं उनके लिए बिल्कुल बेसिक सा एक आज का जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी देयर, but it is a very very important topic. So whenever we are doing the units, तो units पे हमारे पास different types of units होते थे. जैसे for example initially we had the FPS system जिसको हम use करते थे. FPS means foot, pound and second. So foot that was used for length, pound was used for weight and S that was used for second. उसी तरह से we were also using another one which was the MKS system. MKS system is the meter kilometer meter kilogram in second system. एंड फिर उसके बाद एक छोटा यूनिट जो कि हम अभी भी यूज करते हैं दैट इज CGS. ये दोनों यूनिट्स इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, बट हम लोग CGS यूनिट इज अ स्मॉलर यूनिट व्हिच मींस C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकंड. So this is one type of units which we are using now. But the most important and the most common over here, that was the foundation was laid in the year 1960 by General Conference of Weights and Measurements, या जिसको हम लोग अब क्या बुलाते हैं, International System of Units, International System of Units, or we can use it as SI units. Okay, so International System of Units या SI units, this is the most important and the most used, you must have done in your junior classes also. Now, according to the SI system, there are two types of units. There are 7 base units जिनको हम लोग क्या बुलाते हैं, they are known as fundamental units, or they may also be known as base units. ये जो base units होते हैं, ये there are 7 base units. ये एक किसी भी मैटर की अपनी एक क्वांटिटी या अपनी एक आइडेंटिटी होती है, इसको हम किसी से भी डिराइव नहीं करते. So let's look at these 7 fundamental units, guys. First of all, 7 fundamental properties. The first one which we have is length. Second is mass. Third is temperature. Fourth is time. Fifth is electric current. Sixth is intensity of light. And seventh one is, I'm putting it over here, amount of substance. Amount of substance. तो ये जो है ये 7 बेस प्रॉपर्टीज है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है. तो इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के जो SI यूनिट्स होते हैं, they are going to be मीटर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल m. Mass is going to be kg, kilogram. Temperature is going to be Kelvin. Time is going to be second. Electric current is going to be ampere. और एम्पियर का जो सिंबल है बच्चों, दैट इज कैपिटल A. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, राइट, जिसको हम लोग CD के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज गोइंग टू बी मोल, which may be presented as MOL. Okay, you can't see. अपने नोट साथ साथ बनाते रहना, ठीक है.
और थोड़े से एक्सटेंसिव नोट्स जो है वो ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल. ओके, सो ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं. इन यूनिट्स से हम लोग बाकी यूनिट्स को डिराइव करते हैं. So the second type of units which we have over here, अच्छा इसमें 2 यूनिट्स और हैं, 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज और हैं जिनकी डायमेंशनलेस यूनिट्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, there are 2 more units over here. So we have, I'm putting it over here, plane angle. Plane angle is unit which we are using is radian. Okay, and the other one which we have is solid angle. तो ये जनरली यू यूज इट इन योर सीनियर क्लासेस, बट आपने जो याद रखना है दैट इसका जो सॉलिड एंगल है इसका स्टर्डियन होता है. बट वी आर गोइंग टू फोकस टिल 7 बेस properties of matter or 7 base units of matter. Ab you will have to use certain multiples and sub multiples in your measurements. So I'm going to tell you कि ये क्या multiples और sub multiples हमारे पास क्या है. When we're talking of multiples over here, तो multiples आपके पास आ जाते हैं 10 raised to power 24. ओके, एक्सपोनेंशियल्स जो है, ये एक्सपोनेंट्स जो है ये हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में कर लिए. तो जिन्होंने नहीं देखी है वो क्लास, प्लीज डू इट एंड प्लीज शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स सो दैट दिस कोर्स रियली बिकम्स पॉपुलर एंड इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू गैदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर 1. और नंबर 2, बहुत सारे क्वेश्चंस करने में आपको आसानी रहे, राइट. तो 10 raised to power 24 प्रीफिक्स जो हम इसका यूज करते हैं दैट इज योटा एंड द सिंबल इज कैपिटल Y. फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है 10 raised to power 21. So prefix used is zeta and the symbol we are using over here that is Z. Then we have 10 raised to power 18 which is exa, capital E, 10 raised to power 15 which is peta, capital P, then 10 raised to power 12 which is tera and capital T, 10 raised to power, इसके आगे के आपने सुने भी होंगे names, this is giga. Okay, giga माने capital G and then you have 10 raised to power 6 which is mega and capital M, 10 raised to power 3 is, ये तो पता ही है, किलो. And we are using over here small k guys, please keep this in mind. 10 raised to power 2 is hecto H and 10 raised to power 1 that is going to be deca and this is EA. तो ये आपके पास आ गए मल्टीपल्स. मल्टीपल्स का मतलब जो पावर्स है उनको हम पॉजिटिव में ले, ठीक है. फिर आपके पास आ जाते हैं सब मल्टीपल्स. अब सब मल्टीपल्स में आप देखोगे कि पावर्स को आप नेगेटिव में लेते हो. ओके, सो वी हैव टू बी फेमिलियर विद बोथ पॉजिटिव आल्सो व्हिच इज द मल्टीपल and sub multiple which is going to be negative. So we want to start with 10 raised to power minus 1 deci. Okay, 10 raised to power minus 2 पता है आपको, very good. Centi, 10 raised to power minus 3. Milli, 10 raised to power minus 6. Micro, 10 raised to power minus 9. Nano, 10 raised to power minus 12. Pico, 10 raised to power minus 15 is femto,
10 raised to power minus 18 is atto, 10 raised to power minus 21 is going to be zepto, and 10 raised to power minus 24, that is going to be octo. Okay, so these are multiples and sub multiples which we are using. Now अगर हम लोग जैसे let's see हमको इसको use हम कैसे कर सकते हैं, जैसे for example we have over here a symbol which is mg. So mg क्या हो गया, that is going to be microgram. माइक्रोग्राम का मतलब हुआ 10 raised to power minus 6 grams, because micro is the multiple the sub multiple which we are using, और उसका मतलब क्या होता है 10 raised to power minus 6. so माइक्रोग्राम का मतलब क्या हुआ 10 raised to power minus 6 grams. ओके, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है, सपोज आपको यूनिट दिया हुआ है डीएम. तो डीएम दैट इज गोइंग टू बी डेसीमीटर. ओके, सो डेसीमीटर का मतलब क्या हुआ 10 raised to power minus 1 meters. So this is how you use the multiples and the sub multiples. अगर आपको दिया है PS, PS का मतलब क्या हुआ पिको सेकेंड. So pico means 10 raised to power minus 12 or second 10 raised to power minus 12 seconds. Okay, now if they have given you m mole, ये हम काफी यूज करने वाले हैं. एम मोल, एम मोल का मतलब होता है मिली मोल. So that will be equal to 10 raised to power minus 3 मोल. तो इस तरह से हम लोग ये आपको लग रहा होगा कि क्यों मैं प्रीफिक्सेस और आप सॉरी आपको मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स बता रही हूँ, वो इसी वजह से बिकॉज यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस इन विच ऑल दिस दे मे बी यूज्ड. ऑलराइट, नाउ ओवर हियर एज वी जस्ट सेड कि ये सारे क्या है, दे ऑल आर यू नो द बेस यूनिट्स व्हिच वी आर यूजिंग, और बेस यूनिट्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं taking into consideration the multiples and submultiples. ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे derived units. So let's try and figure out कि हमारे पास derived units या derived properties क्या है. Base units तो हमारे पास सिर्फ 7 है. Okay, but we have innumerable number of things which you have to measure in your physics as well as in chemistry. तो derived units means क्या हम लिख सकते हैं कि these are the units derived from base units. ठीक है, so जिसको हम base unit से derive करेंगे that is going to be what? That is going to be the derived units. Like for example, if we are taking over here density. So guys, density क्या हो गई? Mass upon volume. अगर हम इसकी यूनिट ऐसा यूनिट करते हैं तो मास की यूनिट क्या है केजी, अपॉन वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई मीटर क्यूब. तो व्हाट इज गोइंग टू बी द यूनिट केजी पर मीटर क्यूब. अब जनरली हम डेंसिटी को सीजीएस यूनिट में मेजर करते हैं, तो सीजीएस यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. So this is the smaller unit. kg per meter cube is the bigger unit, or grams per centimeter cube, this is going to be the smaller unit. ठीक है, now let's see, we are taking over here, I'm going to give you a small table of derived units, right? So two tables we are going to discuss. Let's see, we are taking over here area. Area is square meters. Done. Okay, area is length into breadth. Okay, या लेंथ का स्क्वायर. फिर वॉल्यूम, ये सारे के सारे डिराइव यूनिट्स हैं. मीटर क्यूब, वेलोसिटी, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस बुलाते हैं, मीटर्स पर सेकेंड, फॉर्मूले आपको सारे पता है. एक्सेलरेशन, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर,
density. So we've already taken density over here, kg per meter cube. I'm taking SI units over here, guys. Please remember. Molar mass is kg per mole. Okay. And then you have molar volume. Molar volume is going to be meter cube per mole, right? And then we have molar concentration. Molar concentration is going to be mole per meter cube. ठीक है. So molar volume अगर आप ले रहे हो, it is meter cube per mole, और अगर आप molar concentration ले रहे हो, mole per meter. Right? Now there are certain special names which are given to some of the units. Let's try and understand कि वो special names हम किस किस को देते हैं. Like for example, if we are taking frequency. Frequency का जब हम रेडियो की frequency, waves की frequency को measure करते हैं, that is generally measured in hertz. So this is a special name given. और hertz का मतलब क्या हुआ? Per second. ओके तो अगर आप उसको बेस यूनिट्स के साथ कोरिलेट करोगे तो हर्ट्ज इज इक्वल टू पर सेकेंड, राइट. फिर उसके बाद आपके पास फोर्स आ गया. फोर्स को हम लोग न्यूटन. अब न्यूटन का मतलब क्या हुआ? केजी मीटर पर सेकेंड. ओके केजी मीटर पर सेकेंड. फोर्स के बाद आपके पास आ जाता है प्रेशर. Pressure, that is going to be pascals. So what is pressure? Force per unit area. So for force per unit area अगर आप ले रहे हो तो that is going to be Newton per meter square. ठीक है. और pressure के बाद energy. These are certain special units we are taking, which is joules. So joules, that will be equal to kg meter square per second square. Okay, and you have electric charge. Coulombs. Coulomb का symbol क्या होता है? Sorry, C. Q is charge and इसका जो symbol होगा that is going to be C. ठीक है. So coulombs जो है that is equal to ampere second. Amount of current passing per second, that is going to be electric charge or coulomb. फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है पावर. So power, that is equal to what? And what is equal to joules per second. Then you have electric resistance. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का पता है ना, ओम्स. ओम्स क्या हो गया? पोटेंशियल पर एम्पियर. ठीक है. सो पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या कहते हैं, पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. सो दीज आर स्पेशल नेम्स व्हिच वी आर यूजिंग फॉर सम ऑफ द यूनिट्स. पर हैं ये भी क्या? दीज आर आल्सो डिराइव्ड. नाउ वन very important factor which comes in measurement, that is going to be the conversion of units. Already हम लोग rounding off कर चुके हैं, scientific notations कर चुके हैं. तो जिन्होंने पिछली वाला chapter 1.2 नहीं देखा है, I would recommend that you go through 1.2 because every lecture is going to be in continuation. छोटे छोटे 20-25 minutes के lectures हैं, so you can watch it again and again to memorize the things, which is much easier than taking your offline classes. Okay. Over here, the best thing is कि आप एक ही lecture को 100 times देख सकते हो और nobody can stop you.
ऑफलाइन में ये नहीं होता है, ऑफलाइन में एक बार ही लेक्चर इज ओवर देन यू कैन ओनली गो फॉर योर डाउट्स. सो प्लीज इसको अच्छे से देखो बिकॉज दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू. देन वी आर गोइंग टू गो ऑन टू कन्वर्जन फैक्टर्स. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हम लोग कर रहे हैं. कन्वर्जन फैक्टर्स में एक टेबल आपके नोट्स में दे रखा है. ओके, so you have to just go through that table and see कि conversion factors हम कैसे करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 1 माइल ले रहे हैं, so 1 माइल that is going to be equal to 1.6 किलोमीटर्स. तो इस तरह के कन्वर्जन यूनिट्स आपको आने चाहिए. अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स ले रहे हो, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट that is equal to 3.3 into 10 raised to power minus 10 coulombs. या अगर आप 1 लीटर एटमॉस्फेयर ले रहे हो और 1 लीटर एटमॉस्फेयर को आपको कन्वर्ट करना है इनटू जूल्स. सो 1 लीटर एटमॉस्फेयर that is going to be equal to 101.3 joules. These conversion factors are very important because whenever we are doing any kind of numericals, हमारा first step होता है to convert it into the same kind of units. Okay? कि किसी एक का लीटर एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है प्रेशर और या एनर्जी और दूसरे का हमें जूल्स में दे रखा है, तो हमको सबको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या लीटर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दैट इज वेयर योर कन्वर्जन फैक्टर दैट इज गोइंग टू कम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है. फिर उसके बाद आपको ये भी पता है कि 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू 4.184 joules. और यू आर टेकिंग लेट्स से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट that is equal to 760 mm of mercury, that is also equal to 760 torr. तो ये टेबल आपको नोट्स में दे रखा है गाइस. You can just go through those, all those who are going to download the app and take the notes. उसपे this entire conversion factor का आपका table has been put forward. Now, if we have to, change the unit, how do we do that? हमें कुछ ना कुछ information in certain units will be given to us in the question and we have to sort certain information. So what is the trick which we are using or the formula which we are using over here? That is information sort that will be equal to information given into conversion factor. So let's understand information given, information sort easy. पता है आपको कि information sort मतलब जो आपको information चाहिए. information given का मतलब ये हो गया जो information आपको दी है. अब ये conversion factor क्या बला हुई? Conversion factor is converting the unit. So you have to take a unit factor. This may also be written as unit factor over here. Right? Like for example, if we are taking if we have to convert joules to calories, ठीक है. So we know that in order to do so हम लोग को या जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें कन्वर्ट करना है 5 कैलोरीज to joules. So what is the conversion factor over here? That will be equal to 1 calorie और आप कह सकते हो 1 joule that is equal to 4. एक मिनट देखो कन्वर्जन फैक्टर आपका आ गया 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.184 joules. ठीक है. सो 1 विल बी इक्वल टू व्हाट 4.184 joules. यूनिट फैक्टर ले रहे हैं हम अपॉन 1 कैलोरी. ये आ गया ना. सो ये हमको दिस इज गोइंग टू बी द कन्वर्जन फैक्टर और द यूनिट फैक्टर. तो कन्वर्जन फैक्टर आपके पास ये आ गया. कन्वर्जन फैक्टर इज 4.184 joules अपॉन 1 कैलोरी. डन. अब इंफॉर्मेशन गिवन इज हाउ मच 5 कैलोरीज. 5 कैलोरीज इनटू unit factor which will be 4.184 joules upon 1 calories. तो ये कैलोरी और कैलोरी कट गया. जूल्स में हमारी ये कन्वर्जन हो चुकी है. इट विल बी 20.9. So this is how you convert it. Very important guys.
इसको एक बारी फिर से देख लेना है आपने. I am taking another example over here. We have to convert 15.0 liter atmosphere into ergs. तो पहले इसका यूनिट फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं. हमारे पास जो 1 लीटर एटमॉस्फेयर होता है, दैट इज इक्वल टू 101.3 into 10 raised to power 7 ergs. ठीक है, ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर है. सो मतलब ये हमारी कन्वर्जन फिगर है. अगर हमको इसे कन्वर्जन फैक्टर में यूज करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेरी सिंपल, 1 will be equal to 101.3 into 10 raised to power 7 ergs upon 1 liter atmosphere. चलो, हमको 15 लीटर एटमॉस्फेयर को अर्ग्स में कन्वर्ट करना है. सो दैट वुड बी इक्वल टू 101.3 into 10 raised to power 7 ergs into 15 liter atmosphere upon 1 liter atmosphere, है ना? तो ये और ये हो गया कैंसिल, and you can very easily find out the answer over here, which will become equal to 15.2 into 10 raised to power 9 ergs. साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. 1.52 लेफ्ट, add 10 raised to power 10 ergs. Right, guys? So this is our topic for today. I hope you have understood. In my next class, I am going to tell you something about logs, a little bit about differentiation and integration. में shortcuts हम लोग किस तरह से use करेंगे, उसमें भी मैं आपको एक टेबल दे दूंगी कि क्या पॉइंट्स होते हैं, किस तरह से हम लोग यूज करने वाले हैं उनको, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को. एंड वी विल आल्सो ट्राई एंड स्टडी सम ऑफ द ग्राफ्स. So that is our next class. Till that time, please revise this, do a lot of conversions, and be ready for the next class. Bye bye. Take care. See you soon.